It is once again that time of the year, Republic Day. Today, being 26th of January, marks a very important date for the freedom of our country. Though we celebrate this event every year, the reason is not very well known as to why this occasion is celebrated. This date holds a lot of value for our country. Throughout the years, nothing was more important to us than Purn Swaraj, meaning complete independence. Great men like Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi gave their life and paved the way for our independence, which helped us to bring about the Constitution. B.R. Ambedkar, the father of our Constitution, along with the Constituent Assembly, 26 January was chosen as Republic Day to honor the leaders and freedom fighters who declared it to be as the Purna Swaraj Divas. The national flag is raised and the national anthem is sung in schools, institutions and private and government workplaces all around the country to commemorate Republic Day. The President of India raises the national flag and salutes the tricolour in the center of the celebration at Rajpath, New Delhi. Military tanks, missiles and combat aircrafts are on display as India flaunts its might. Jai Hind. After attaining independence from the British, the first challenge that Indian government had to face was to establish their own constitution. B.R. Ambedkar, along with other great leaders, made it possible and created the constitution by taking consideration from all the people from different castes and religions to ensure that no particular group of any caste or religion is left deprived to enjoy their freedom and their rights. Jai Hind, Jai Bharat. Republic Day has a special significance in the history of India. To make this day a memorable day, the national event is celebrated with lots of pride, joy and happiness in our hearts. It also commemorates the establishment and adoption of India's constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Today, we are celebrating our 74th Republic Day of our country India in the year 2023. So, on this auspicious occasion, first of all, I would like to salute our great fearless Indian soldiers who protect India by playing on their lives day and night. It is very important for every Indian to know about the importance of Republic Day. With this, we will be able to explain this to the coming generation about the value and importance of this day in our lives. I request you all to come together in order to take our country to the heights of success. Jai Hind, Jai Bharat. We all have congregated here to commemorate the 74th Republic Day of India. Indian Constitution, which was designed by a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar. On the same day, Dr. Rajendra Prasad began his term as the first President of India, and the Constituent Assembly became the Parliament of India under provisions of the new Constitution. This Republic Day is only because of the sacrifices of thousands of people who provided us freedom from the British rule and gave the opportunity to govern our country by our own Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. After India got independence, they made a constituent assembly and the work on making the constitution got fast. And after 2 years, 11 months and 18 days, the incredible constitution of India was made. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. First of all, I would wish you all a very happy Republic Day. It was on this day when our constitution came into force in the year 1950. The Constitution of India is a testament to the values of democracy, equality and liberty. India turned into a secular and democratic nation on this day. On this day at Rajpath, there are several glimpses of different states. There is a parade of different regiments of the army, and there is an air show by the Indian Air Force. Jai Hind, Jai Bharat. तो मेरी इस अरचना का आरंभ कुछ इस प्रकार है। आओ तुम्हें इतिहास की आज एक सैर पर ले जाएं। 26 जनवरी की इस गाथा से तुम्हें रूबरू कराएं। 1919 का था वो वक्त, हर ओर अंग्रेजी पहरा था। लाहौर में कांग्रेस के द्वारा की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी को हो जश्न आजादी, इस बात की मन में ली थी ठान। तो आओ कुछ बीती बातों को आज फिर सामने ले आए, तुम्हें आज इतिहास की एक सैर पर ले जाएं। 1947 का वो वर्ष था, हर तरफ केवल उत्साह और हर्ष था। मिल गया था वरदान हमें इस देश की आजादी का, मिला था परिणाम हमें उन वीरों की कुर्बानी का। तो आओ तुम्हें आज इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचाएं, तुम्हें आज इतिहास की एक सैर पर ले जाएं। 1949 तक बन चुका था इस देश का संविधान, 26 जनवरी को अपनाया इसे ताकि रखा जा सके उनकी कही बात का मान। अब हर वर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
कक्षा 8वीं डी की छात्रा गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष हमारे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में प्रथम बार संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए। भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिवस पश्चात 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग समिति का चुनाव हुआ। 4 नवंबर 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को अलंकृत करने का ऐतिहासिक कार्य श्री नंदलाल बोस ने अपने मित्र राम मनोहर सिन्हा के साथ पूर्ण किया। उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन से कुछ कलाकारों के समूह का चुनाव किया, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान के 28 पूरक चित्रों और 234 सजावटी पृष्ठ सीमाओं का रचना करी। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के 308 सदस्यों ने हमारे संविधान के 2 हस्तलिखित अनुवादों को स्वीकृति दी। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर। फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि